Okay, good afternoon to all. So today we'll start the polygon law of vector addition. So polygon law सेतेबेले applicable हो जेतेबेले हमरा more than two sides थिबो. तो आमे तो triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition ले देखले दीटा वेक्टर को आमे ऐड करथले. किंतु polygon law of vector addition ले we will add more than two vectors. So what is this laws? If a number of vectors okay, so if we take various number of vectors, okay, they are represented both in magnitude, and as well as direction. Okay, both magnitude and direction by the sides of an open polygon. We will take by the sides of an open polygon polygons means more than two sides. Okay, the figures with more than two sides. So by the sides of an open polygon, then taken in the same order, they are taken polygon, they are taken in the same order. Okay. So these sides are taken in same order, then their resultant will be represented by तो तांका रिजल्टेंट को मो रिप्रेजेंट करि परिबी केमिति रिप्रेजेंट करिबी ना बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. द रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. okay, by okay, the closing sides of the polygon. Polygon लो last side जोटा थिबो सेटा द्वारा हम ताको शो कर परिबे both magnitude and direction by the closing sides of the polygon taken in the opposite order. Taken in opposite order. So we will understood it with the diagram illustration. The illustration kon now I will take some sides, this a vector, b vector, okay, and there are more sides. You can take c vector, d vector. Now I will add all these vectors. Okay, first I will take, suppose this is O origin, okay, then this is my A origin and this is my point P नहीं जाओ, then this will be my A vector, then this side, this is P, O, P, then Q, this is my third side. Next OP Q पर आमे जिबा S, S पर जिबा T, okay, S पर जिबा T, then finally पड़े आसो एठी कोठी O को, finally we will go to the O. So what does this say? ये कौन कहूची ना, suppose we wish to add four vectors, A vector, B vector, C vector and D vector. Suppose we wish
to add a vector, b vector, c vector and d vector यदि आम यूज कर देन फास्ट ऑफ ऑल कौन करिया पड़िबो ना ड्रॉ ए वेक्टर ओपी वेक्टर ए वेक्टर ड्रॉ ओपी वेक्टर दिस इज टेकन एज ए वेक्टर ओपी वेक्टर को आम कौन नहीं ए वेक्टर नेक्स्ट आम कौन करवा मोर वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आउ डी वेक्टर ए वेक्टर पर किए किए बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर सो दे आर टेकन पैरेलल टू देमसेल्फ ओके a vector b vector and c vector they are taken parallel such that the tail of b vector touches the head of a vector, the tail of c vector touches the head of b vector, the tail of d vector touches the head of c vector respectively. Then according to polygon law of vector addition, so according to polygon law of vector addition so polygon law of vector addition आम कौन करिपरिबा according to polygon law the resultant vector r vector this will be given by a vector plus b vector plus c vector plus d vector so the resultant vector will be given by the sum of this individual vectors a vector b vector c vector and d vector okay I will prove it एटा को हम प्रूव करें so first of all what will be OQ vector in triangle OPQ OQ vector कितने हो so OQ vector will be OP vector plus PQ vector so this will be OP vector plus PQ vector so this will be A vector plus B vector so in triangle OPQ I will get this next in triangle OSQ in triangle OSQ OSQ triangle similarly कौन होगा now this is A vector plus B vector so you will get OQ vector plus QS vector okay so this will be OS vector कितने होगा OQ vector plus QS vector so this is A vector plus B vector plus C vector okay OS vector को पाइज भी A vector plus B vector plus C vector finally OT vector will be represented by OS vector plus ST vector so OS vector plus ST vector हेले कितने हो ना this will be A vector plus B vector प्लस सी वेक्टर सहित कौन ऐड करियो डी ए वेक्टर सो टोटल ऊपर तुम पाई जाओ कौन रिजल्टेंट सो दिस इज माय फ्रॉम इनिशियल पॉइंट आई हैव स्टार्टेड विथ दिस द रिजल्टेंट वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सो टी वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर सो दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर ओके सो हेंस दिस इज प्रूव्ड so resultant will be A vector plus B vector plus C vector plus D vector okay next we will show this vector algebra this is commutative the vector addition जो आम करूँगी so the vector addition से कौन हम commutative हम okay so polygon law बुझीगल first तुम गोटे side नम OP vector that is represented by A vector OP and PQ that is represented by B vector then QS that is represented by C vector then ST that is represented by D vector then हमें polygon ला देखिले the polygon the resultant side is taken in the opposite order and these are taken in the same order okay the individual vectors so the resultant will be sum of these individual vectors next is my vector addition is commutative
वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन आमर केमी कम्यूटेटिव हम विल टेक विथ एन एग्जांपल ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं कि हमें प्रूव करिया वेक्टर एडिशन केमती हो सपोज द साइड ऑफ ओपी एंड ओक्यू सपोज आई एम टेकिंग दिस ओपी ओके दिस इज माय ओपी दिस इज टेकन एज ए वेक्टर and OQ this is taken as B vector then draw like this as parallelogram and join this is my resultant vector so mo proof kari vector addition eti commutative hobo okay the sides OP vector eti the sides sam jo nouchi OP vector and OQ vector of the parallelogram they are respectively A vector and B vector here OP vector and OQ vector केते केते हम दिस ओपी वेक्टर इज ए वेक्टर ओक्यू वेक्टर इज बी वेक्टर देन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मु केते पाइबी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जति मु यूज करी so first of all OP vector plus OQ vector I will get OS vector OP vector plus OQ vector I will get OS vector so this is parallelogram law of vector addition then this will be A vector plus B vector this is my resultant vector S vector so A vector plus B vector is my resultant vector S vector so here I will observe OP vector will be equal to QS OP will be QS and OP is parallel to QS OP is QS and OP is parallel to QS तो ता माने कौन OP जति QS से इक्वल हुए एंड OP जति parallel to QS हुए देन OS OP केते हिजो OS is equal to OS केते हिजो QS suppose this will be QS is equal to OP QS केते हिजो this will be OP so QS जति OP हे जाए मते केते मिलियो OP vector हिजो A vector okay so QS equal to OP is equal to A vector now using triangle law of vector addition in triangle OQS use triangle law of vector addition in OQS use triangle law of vector addition in triangle OQS so OQS triangle में यदि triangle law vector addition apply करे मोर कौन होगा यदि OQ is represented by one side and QS is represented by another side so this will be OQ vector plus QS vector this will be the resultant vector that is my OS vector so I can represent OS vector is equal to resultant vector R vector this is equal to OQ plus QS OQ is a B vector so I can this is represented as B vector plus A vector and I can arrange at A vector plus B vector so resultant OS vector mo finally kete paili A vector plus B vector initially mo parallelogram law vector addition करके जितनी पाई थी so from this equation 1 and 2 from this equation 1 and 2 so this is arrange करके लिखो Q plus QS कितना हो B vector plus A vector B vector plus A vector so from my equation and equation 1 and 2 I will get from equation 1 and 2 I will get this A plus B vector will be equal to B plus A vector B plus A so A plus B vector will be here equal to B plus तो ये हमें देखिले जदि मु A vector एटा नोची B vector एटा नोची adjacent side of the parallelogram then तार parallelogram law हिसाब रे मोर कोन हो जो resultant side this will be OS vector this will be A plus B vector
देन एटी मु ट्रायंगल एडिशन यूज करछि कोठी ओ क्यू एस ट्रायंगल ले सो दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज माय ए वेक्टर सो दिस विल बी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सो ए प्लस बी वेक्टर मोर हे गला इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर सो दिस प्रूव्स द वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव ओके सेटा तो प्रूव करूछि जे वेक्टर एडिशन हम जति करबा वेक्टर एडिशन कोन हो कम्यूटेटिव हो नेक्स्ट टाइम पढ़िया वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव वेक्टर एडिशन कौन हम एसोसिएटिव हो सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तुम जान ए प्लस बी वेक्टर होल ब्रैकेट प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी रो होल ब्रैकेट सो सपोज आई एम टेकिंग थ्री वेक्टर्स सो दिस इज ओ पी एटा को मैं ए वेक्टर रिप्रेजेंट करछि पी क्यू को मैं रिप्रेजेंट करछि बी वेक्टर ओके ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू को मैं रिप्रेजेंट करछि बी वेक्टर देन एटा को मैं रिप्रेजेंट करूछि ए वेक्टर को सी वेक्टर ओ पी क्यू देन आर सपोज देन दिस इज माय रिजल्टेंट ओके सो रिजल्टेंट को मैं होछि अपोजिट ऑर्डर रे सो you will first take this okay तो एटा यदि ए वेक्टर हुए एटा यदि बी वेक्टर हुए ओ क्यू केते ही जो ए प्लस बी वेक्टर दिस विल बी ए प्लस बी वेक्टर एंड ए ट्रायंगल देखो ओ क्यू आर एटा यदि सी वेक्टर हुए देन मत ए जो ट्रायंगल ओ क्यू आर रे ओके तो दिस विल बी बी प्लस सी वेक्टर ओ क्यू आर नहीं PQR so this will be B plus C vector so first understand this कौन होची ना suppose three vectors A vector B vector C vector में नौचंती they are represented by three sides OP PQ and QR then according to polygon law of vector addition what I will get so the OS vector polygon law of vector addition हेले मोर जो OS OR vector जो आसीबो suppose this is S then OS vector मते कौन कहो polygon law of vector addition according so this will say OS vector will represent the resultant side so this will represent the resultant vector OS vector then join O to Q O to Q को join करो and P to S को join करो so this is my construction join O to Q and join P to S so next I will prove this okay so केमती प्रूव करिया ना यूजिंग ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओके यदि मो ट्रायंगल लॉ यूज करी कौन हम हमर ना इन ट्रायंगल ओ पी क्यू OP क्यू ट्रायंगल ले मुझे पाइबी कौन OP क्यू इन ट्रायंगल OP क्यू आई विल गेट दिस OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर now OP वेक्टर इज माय A वेक्टर प्लस B वेक्टर will be OQ वेक्टर ओके so OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर मोर केते होबो OQ वेक्टर so this will be OQ vector this is my first point next triangle नोची OQS in triangle OQS triangle similarly मोर कौन हो OQ vector plus QS vector OQ vector plus QS vector ओके एटा मते कौन दबो OQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर दिस विल गिव मी OQ वेक्टर तो हमें जानी चंती A प्लस B वेक्टर एंड OS वेक्टर टा केते OS OQ हाँ देन QS वेक्टर केते C वेक्टर प्लस C वेक्टर सो इन ट्रायंगल OQS
OQS, I will get OQ vector plus QS vector. So this will be A plus B vector plus C vector. So this is my equation 1. Equation 2. Next I will consider what triangle? In triangle PQS. In triangle PQS triangle ले मोर केते हो PQS triangle ले B vector, that is PQ vector plus QS vector. PQ vector plus QS vector more represented by PS vector. So PQ vector केते A vector, PQ B vector plus QS vector C vector. This is my PS vector. Okay. In triangle PQS I will observe B vector plus C vector. This will be my PS vector. Then in triangle OPS. In triangle OPS I will observe OPS A vector, that is OP vector plus PS vector. They will be the OS vector. OP vector plus PS vector मिसी केते OS vector. So OP vector तो मुझे जानी ची केते A vector and PS vector मुझे बे बाहर कली. So this is my B plus C vector. So this is my OS vector. So this is equation number 3. This is equation 3 and this is my equation 4. Now considering equation 2 and 4. Considering my equation 2 and 4, I will get I will get. So from equation 2 I will get OQ vector plus QS vector. This is A plus B vector plus C vector. So I can write this as A plus B vector plus C vector is equal to, now equation 4 रे मु कोन बाहर करछि ना A vector plus B plus C vector. So this will be A vector plus B plus C vector. Okay, B plus C whole vector. तो एटर मु जो पाइली कोन A plus B vector plus C vector. So this law is known as associative. So this law is known as associative law in vector addition. Okay. So एमती हम पढ़ले vector addition is commutative. First vector addition is commutative. Vector addition is commutative. Next कौन पढ़ले vector addition is associative. Okay, so these two properties of vector addition we'll study. Next we'll study about the analytic method of vector addition. So we'll study analytic law of vector addition. So analytic law of vector addition हम कौन कहूँ? Let the two vector A vector and B vector, they are represented both in magnitude and direction. Let A vector and B vector represented both in magnitude and direction. Magnitude and direction. Okay, A vector and B vector both magnitude and direction. They are represented by the side OP vector and PQ vector, by sides OP vector and
PS vector नहीं PQ vector of triangle OPQ. So we will draw this triangle. So to see OP vector and QS vector, they are taken in same order. They are taken in same order. So draw this diagram, you will understood better. So this is my OP vector, O origin, and this is P vector. So OP vector, then this is my PQ vector. So this is my OP vector and this is my PQ vector. एक को represent करची A vector, एक को represent करची B vector. Then draw an perpendicular. Okay, perpendicular गोटे Q vector रू तुम्हें draw on करो. So this is my N and this is my angle theta and this is my angle beta. Okay, so ये angle टाक मुझे कोची theta angle, ये angle टाक मुझे कोची beta angle. Okay, then this is my OP vector is A vector and PN vector. This is PN and this is my normal QN. तो ये कौन होची ना OQ vector. OQ vector मोर कौन? This is resultant vector, triangle law vector addition हिसाब रे. So OQ vector is A plus B vector. तो ये मुझे कौन कली ना OP vector first नेली A vector, PQ vector मुनेली B vector. Then according to then according to triangle law of vector, they are taken in same order. Then by triangle law of vector addition, वो कौन पाइबी resultant vector R vector, this will be A vector plus B vector. This is my triangle law of vector addition. Then the magnitude of resultant R vector कितने आसियो से उठो मुझे देखी what will be the magnitude of resultant R vector. The magnitude of resultant R vector, यार magnitude बाहर करिया. So R vector magnitude बाहर करिया. तो magnitude बाहर करिया पे मैं किसी construction कली. So QN को draw कली perpendicular to OP. तो draw कला परे मैं suppose right angle triangle QNP नोच. From right angle triangle QNP. So QNP right angle triangle ले तो मैं trigonometry यूज करो. QN by PQ. So इटा तुम्हारा sin theta आसियो. So sin theta इटी कितना आसियो? QN by PQ. Sin theta will be QN by PQ. Then QN value कितने हिजो? PQ sin theta. So QN will be PQ sin theta. Now PQ value तुम्हें जानी चाहिए. हाँ PQ value जानी चाहिए. So this will be B sin theta. So QN तुम्हारे कितने गला? B sin theta. Okay. Next use this triangle OQN. Using the triangle OQN. हाँ एटी cos theta value कितना आसियो? Here in this triangle QNP cos theta कितना आसियो? So cos theta will be PN by PQ. Cos theta कितना आसियो? PN by PQ. So PN कितने हिजो? PN will be PQ cos theta. So PQ value कितने? PQ value is B vector. So B cos theta. So PN पाई गली B cos theta and QN पाई गली B sin theta. From triangle QNP I will getting this because this is a right angle triangle. Right angle at N. यार right angle कितने? N. Second मु consider करची in triangle OQN. Okay. So then using Pythagoras theorem जदि मु यूज करी ONQ को. Now use Pythagoras theorem to triangle ONQ. To triangle ONQ.
सो ओ एन को ट्रायंगल जब पाइथागोरस थ्योरम मु यूज करे मोर केते आसी ओ क्यू रो स्क्वायर दिस इज माय hypotenuse ओ क्यू रो स्क्वायर will be o n रो स्क्वायर प्लस n q रो स्क्वायर o n स्क्वायर प्लस n q रो स्क्वायर ना o n को मु लिख परिबी o p प्लस p n so this is my o p प्लस p n रो होल स्क्वायर प्लस o q रो q n रो स्क्वायर that is n q रो q n रो स्क्वायर so this is my q n रो स्क्वायर okay so op plus pn रो होल स्क्वायर प्लस q1 रो स्क्वायर ना op वैल्यू मु जानि छी कि op this is a vector so p is a plus pn pn हला केते b cos थीटा वैल्यू पुट कर देली मु so a plus b cos थीटा प्लस q1 केते b sin थीटा तो यार स्क्वायर प्लस b sin थीटा रो भी स्क्वायर I will get this ओके सो एठु मु केते पाइबे ओ क्यू रो स्क्वायर सो ओ क्यू रो स्क्वायर केते दिस विल बी रिजल्टेंट स्क्वायर आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a प्लस b cos थीटा रो होल स्क्वायर सो फर्स्ट करिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा नेक्स्ट जो टर्म रहला b sin थीटा तार होल स्क्वायर केते होबो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा now arrange this term you will get a square okay plus b square common नहीं होची so this will be cos square theta plus sin square theta plus 2ab cos theta 2ab cos theta a square plus b square cos square theta plus sin square theta plus 2ab cos theta so this will be a square plus b square ए आइडेंटिटी तुम जानी चो cos square theta plus sin square theta केते 1 so into 1 plus 2ab cos theta so you will get a square plus b square plus 2ab cos theta 2ab cos theta this is my r square okay then r square जति a square plus b square plus 2ab cos theta हुए then r value केते हो ना r will be a square plus b square plus 2ab cos theta root over so this will be represented by my resultant vector so resultant vector होगा a square plus b square plus 2ab cos theta now जति मु बाहर करिवि tan बीटा से ट्रायंगल टारे मने अछि ट्रायंगल फर्स्ट कोन नेथिलु o पर कोन नेली ताको एक्सटेंड कली pn p then p2 कोन नेली q so this is my resultant थिला एटा एंगल थिला बीटा एटा थिला n so एटा थिला एंगल थीटा so तुम tan बीटा नेबी ट्रायंगल इन ट्रायंगल o n q म्हणजे tan बीटा will be represented by qn by on qn by on so qn वैल्यू तमे जानि छ केते qn you have calculated as हो एटा को हमें फर्स्ट लिख परिया qn डिवाइडेड बाय on को मैं लिख परियो op प्लस pn सो qn को तमे बाहर करथिलो सो qn वैल्यू केते बाहर करथिलो b sin थीटा qn वैल्यू यू हैव कैलकुलेटेड b sin थीटा डिवाइडेड बाय op केते a वेक्टर सो a प्लस pn बाहर करथिले केते b cos थीटा सो pn वैल्यू हम बाहर करथिले b cos थीटा सो एठर हमें कोन जानिया पहिले जदि मु ट्रायंगल ने होची OPQ तार फर्स्ट OP is represented by a vector and PQ is represented by b vector then the resultant represent होची a plus b vector okay then resultant जो magnitude आछी this magnitude of resultant vector this will be given by a square plus b square okay here square plus b square plus the angle this is 2ab cos theta this is my angle theta okay तो तारा रूट ओवर वैल्यू आछी एंड तांक भीतर जो एंगल आछी जो दुईटा वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर so this angle tan beta will be b sin theta plus divided by a plus b cos theta
So beta angle you will find tan inverse of tan theta divided by b sin theta by a plus b cos theta. So এটা তোমার কোন হলা, this is analytical method for this triangle law of vector addition. Okay, so this is my how I can analyze the resultant vector using the triangle law of vector addition. So I presume कि तुम्हें सब बुझे ही थो. So in today's class तो प्राय सब बुझे ही थो. Okay, thank you.